नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज आप सबका लाइव हिंदुस्तान वार्ता CXO सीरीज में। आप सबका इसमें बहुत स्वागत है और मैं इसमें स्वागत करना चाहूंगी अपने खास मेहमान संजीव सरीन का। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया है और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपनी सफलता की कहानी, अपना पूरा सफर, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, ताकि और जो युवा हैं वो बहुत आपकी कहानी से प्रेरित भी हो सकें। पर इससे पहले कि हम ये बातचीत की शुरुआत करें, मैं आपको परिचय देना चाहूंगी संजीव सरीन का। संजीव जो हैं वो एल्यूमिनाई हैं बेहद मशहूर संस्था के IIM कलकत्ता और IHM जयपुर के। वो स्पेशलाइज करते हैं, उनकी खासियत है मॉल ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेल ऑपरेशन, स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि बहुत सारी चीजों में संजीव को महारत हासिल है। कई तरह के पोर्टफोलियो वो एक साथ हैंडल कर रहे हैं, वेंडर मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग। और उनकी एक खासियत ये है कि उन्हें लोगों की बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी पहचान है। कहते हैं ही इज नोन फॉर हिज कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स नीड्स and perceptions, and that has helped him ascertain customer requirements and deliver need-based solution in the customer-oriented retail industry. तो ये उनकी खासियत है कि ऐसे समय में और एक ऐसी इंडस्ट्री में जो रिटेल ओरिएंटेड है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए, इस पर संजीव की पैनी नजर है। वो मौजूदा समय में करंटली वो लीड कर रहे हैं जो पोर्टफोलियो, वो फीनिक्स मिल्स लिमिटेड में पोर्टफोलियो को लीड कर रहे हैं। और इसमें कई चीजें हैं जैसे कि फीनिक्स पैलेसियो लखनऊ और फीनिक्स यूनाइटेड मॉल्स लखनऊ, बरेली, कोर्टयार्ड बाय मैरियट इन आगरा, और उनके जितने एक्सपेंशन हो रहे हैं फीनिक्स के नॉर्थ इंडिया में। तो संजीव जी, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि लोगों को प्रेरित करेगा। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस बातचीत का आपसे ये सवाल पूछ के, क्या आप इस फील्ड में जब आए तो किस तरह की चुनौतियां थी, और इस फील्ड में आने के लिए आपको कहां से प्रेरणा मिली, आपका सफर कैसे शुरू हुआ? तो शुरुआत तो यहीं से करते हैं पहले। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। टू स्टार्ट विथ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2001 से होटल मैनेजमेंट करने के बाद। आई एम ए होटेलियर टर्न्ड इनटू रिटेलर एंड देन रिटेलर टर्न्ड इनटू अ मॉल स्पेशलिस्ट। तो पिछले 22 सालों में मेरा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहा है, रिटेल में रहा है और मॉल में रहा है। होटल में मैंने डिफरेंट कंपनियों में काम किया है, इंटरनेशनल एंड इंडियन बेस्ट होटल्स ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द इंटरनेशनल होटल्स। एंड उसके बाद मैंने अपना करियर शिफ्ट किया होटल से रिटेल में ड्यूरिंग रिसेशन टाइम। I was inspired by retail because retail that time was not organized, and people moving from the hotel industry, there was an opportunity for people to contribute in terms of the organizing that industry, in terms of the SOPs and all that. So setting up the processes वगैरह से मेरा जो intellect है उससे मेरा रुझान उसकी तरफ गया, रिटेल की तरफ। और रिटेल को मैंने उस समय चूज किया, 2008 में मैंने शिफ्ट किया। और रिटेल में आने के बाद रिटेल मैंने ज्वाइन किया वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल कंपनी फ्यूचर ग्रुप, जो कि पहले पैंटालून्स कही जाती थी। पैंटालून्स में मैंने 6 साल लिए हैं, नॉट ओनली द स्टोर मैनेजमेंट बट ऑल्सो हैज हेल्प्ड इन बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी ऑल्सो। और उसके बाद फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मॉल इंडस्ट्री की। पिछले 11 साल से मैं मॉल इंडस्ट्री में हूँ एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन बिट्स एंड पीसेस टू द मॉल। एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन मॉल इंडस्ट्री विद Pioneer Property Zone, which is a South African and Indian conglomerate. And I always wanted to be, initially also I wanted to be part of something like Phoenix Mills, which is one of the best company to work in the country. तो मेरा हमेशा से चाह थी फिनिक्स मिल्स में ज्वाइन करने की, बट मैं उस इंडस्ट्री से नहीं था और सीनियर लेवल पे इंडस्ट्री चेंज करने में आपको इश्यूज आते हैं। तो जब मुझे मौका मिला पायनियर प्रॉपर्टी जोन से फिनिक्स मिल्स में आने का, नॉट पोर्टफोलियो मुझे दिया जा रहा था, तो मैंने उसे बहुत ही चैलेंजिंग तौर पे लिया, बिकॉज नॉर्थ में
नॉर्थ उस समय सबसे छोटा क्लस्टर था फिनिक्स का, और बट मैंने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि छोटा है तो उसको बड़ा करना आसान है। और आपने एक बहुत फेमस अफ्रीका की एक रिसर्च भी सुनी होगी, जहाँ पे एडिडास ने रिसर्च किया था कि अफ्रीका में जहाँ लोग जूते नहीं पहनते उनको जूते पहनाना बहुत आसान है। तो टेकिंग इट ऑन द पॉजिटिव साइड, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये बोलते थे कि भाई जूते नहीं पहनते हैं तो वहां पे सेल होएगी नहीं। कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन जब मुझे फिनिक्स में ज्वाइन किया मैंने, तो उस समय केवल 2 मॉल थे, मिड साइज मॉल, फिनिक्स यूनाइटेड लखनऊ एंड फिनिक्स यूनाइटेड बरेली। एंड होटल एक है हमारा मैरियट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट। ये 3 प्रॉपर्टी मुझे दी गई एंड टर्न अराउंड किया हमने, बहुत सारे चेंजेस किए मॉल्स में इन टर्म्स ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट, ब्रांड जोनिंग चेंज करी हमने, टेनेंट मिक्स चेंज किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द कल्चरल डायनेमिक्स वाज वन ऑफ द कंसर्न। इन सारी चीजों से जूझने के बाद I have been able to give a turnaround to both the malls, and then I got the opportunity in terms of expanding the North Zone business development by the company. और मैंने आइडेंटिफाई किया ये फिनिक्स पलासियो मॉल, जो कि आज की डेट में केवल सिटी का नहीं, स्टेट का नहीं, बल्कि पूरी इंडिया में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमने टेनेंट मिक्स जोनिंग और जो हमने 65+ इंटरनेशनल ब्रांड्स पहली बार लेके आए हैं, ये एक लोगों के लिए बहुत बड़ी पहचान बना है फिनिक्स पलासियो मॉल। और फिनिक्स पलासियो मॉल के आने से फिनिक्स का पोर्टफोलियो जो है और लीडरशिप पोजीशन पे आया है नॉर्थ में। और अब हम यहाँ 3 बड़े मॉल और एक होटल मैनेज कर रहे हैं, और फर्दर डेवलपमेंट भी आगे करने वाले हैं। All right, Sanjeev, like you said, that it was, you really wanted to join the Phoenix Group. आपकी चाहत थी कि आप यहाँ पे शामिल हों. If I may ask you, how was your experience with the Phoenix Group in Lucknow and nearby region? You said you've done a lot of turnaround, and there were also cultural challenges, and आपने उसके साथ काम किया और वो सब में बदलाव लाया और कैसे expansion और turnaround किया. कैसा आपका पूरा experience रहा, तजुर्बा रहा यहाँ पे लखनऊ और आसपास की region में काम करने का? So I'll tell you, my journey with Phoenix from last 6 years plus now has been very, very exciting. It's full of roller coaster and achievements. And turnaround करना आसान नहीं होता है. It's easy to write in book, but it has been only possible with the help of the team and the support from the superiors. So I have been able to turn around in terms of the retail dynamics, which has to be changed. लोगों की सोच बदलना आसान नहीं होता है, वर्क कल्चर बदलना बहुत मुश्किल होता है. इन सब चीजों पे काम किया गया, डिसिप्लिन पे काम किया गया, रिटेल मिक्स का लोगों को ये समझाना, रिटेलर्स वर नॉट रेडी टू फॉलो द डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, SOPs, वो समझाना काफी डिफिकल्ट था आज से 6 साल पहले. हालांकि अब तो सब ऑर्गेनाइज हो गया है, लोग समझने लगे हैं दैट दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द current requirement of the entire world, wherein we need to improve on the standards and follow the rules and regulations laid down by the mall. Then only the mall succeeds. And a lot of mall have created a success story by following on the SOPs and the guidelines. So, and one of the major important thing which has helped us in turnaround for both the old malls was changing the retail mix, churning out the non-performing brand and bringing in the high-end premium brands, and completely changing the retail mix of both the malls, Phoenix United, Lucknow and Bareilly. And we have changed the ambience, decor. We have invested a lot of money, not only in terms of the asset, but also in terms of the employees. We have focused in terms of training, development, needs not only of our employees but also of the retailers. Conducted several retailer and mall management meetings wherein people have been able to evolve gradually, and now they are performing as the best. जी,
अब संजीव, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी उन तमाम लोगों के फायदे के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, कि क्या वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए इससे पहले कि वो इस फील्ड में आए. सो व्हाट आर द की कंसिडरेशंस दैट वन शुड लुक आउट फॉर, कीप इन माइंड बिफोर एंटरिंग दिस मार्केट? So I'll tell you, it's not only the north market which I am handling, but in the entire business perspective for the retail as well as the malls, the most important aspect is understanding the growth potential and the market potential first. अगर market में feasibility है, market में potential है, तभी आप बाकी की 3-4 important चीजें जो हैं, जो कि मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, city potential, market potential, current scenario of the socio-economic growth, which we need to focus on. If the new generation is evolving in terms of the fashion, technology, and all that, that's opening your way for retail and mall management in that particular city. Also, one very important aspect is the identification of the location of setting up of your unit. So if you are able to identify the right location, I understand there are several scenarios wherein limited resources are available and you are not able to get the prime and very prime location which you have thought of. But again, since the location plays a very important role, we should not focus in terms of saving cost in that, and we should try to achieve the best possible location as per our research and analysis. So that is a key mantra. If the growth potential of the city gives you a go ahead that this city requires a 1 million square feet mall with international brands, then you need to identify the growth corridor of that city. If you are not able to get in exact prime time location, then you need to identify the growth corridor of the city, because eventually that is going to grow and people will make a shift. There are certain circumstances where people are not able to adjust in the congested life of a tier 2 city. So eventually the phenomena is that they have to shift to a growth corridor and set up their establishment, their houses, their market out there. So it's very important to identify the right growth corridor and set up your business out. जी संजीव जी, ये भी बताइएगा कि आजकल मॉल लोग जा रहे हैं और तमाम तरह के मॉल हैं. किसी मॉल में एक अच्छा एक्सपीरियंस, किसी मॉल में कोई खास एक्सपीरियंस, किसी में साधारण, ये तमाम चीजें हैं. तो कस्टमर को जो उनका एक्सपीरियंस है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस या उसको कस्टमर एक्सपीरियंस को बदलने के लिए किस तरह से ब्रांड्स जो हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं और आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू एड्रेस the change of experience for the customers? So I'll tell you, it has two parts. One is pre-COVID and another is post-COVID. So keeping that in mind, sure. When we used to talk about customer experience, touch points, moments of truth, that was the essence of customer experience in pre-COVID times. But eventually, all the retailers have learned that the need of an hour is to take care of your customers. So care perspective, creative thinking, and utilizing your technology and tools is the most important aspect which they are working on. And we as a mall owners and a mall management, we help and support them in terms of providing different aspects. So if I have to talk about Phoenix, we have initiated lot of initiatives in terms of technology solutions and taking care of our customers in this unprecedented time. So we had focused on elements like chatbot, virtual assistant being created. Somebody wants to shop from home. There is a virtual assistant in the mall who is helping him navigate through the different merchandise in different stores. And that's how he is able to select his merchandise and order online. We have also worked on the curbside pickup. We have worked on the contactless payment, whether it is related to your parking system, whether it is related to your payment in food court, whether it is related to your payment in the retailers in the mall. So
we have leveraged the opportunity of technology and have supported our retailers in the best possible way by giving that technology support to the extent the kind of a artificial intelligence we had developed in the mall during the COVID time, wherein at one point of time I can understand that how many customers are inside the mall. If I have to control the density of a customer, I can control basis that by stopping my customer entry then and there. So these kind of extra facilities which we had provided, we have not compromised in terms of investing money on that, because people, I have seen people, uh, majorly, most of the companies majorly work on the marketing aspect, but they forget we have to work on the needs uh, of the customer also. So there is very important to create a parity between the customer want and the customer need. We have focused on both the aspect of customer want and needs after the experience of COVID, and which is going to evolve and further improvise with the omni-channel aspects and all that which we have in the retail, wherein people can do online as well as offline shopping. So Yes. this particular aspect we have taken care of well, and we have helped the retailers at the time of unprecedented time Yes. in whatever possible way. Mm-hmm. And that's how, because they are our brand partners. We don't believe in tenant and landlord relationship, which used to be in old times. Sure, sure. Yeah, you very well put it that there are two different aspects to it, pre-COVID and post-COVID, and how care has become a very important part, a very important aspect of providing that experience to the customer. The customer needs to feel looked after and secure and safe, and that they are being cared for. I would like to ask you, आप हमें ये भी बताइए कि किस तरह के की मुश्किलें थी जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम था. We've just seen a pandemic and we cannot say it's over, it's always there. But कैसी मुश्किलें थी, किस तरह के challenges थे, और इस तरह की जो difficult जो दौर था उसमें इन challenges से जूझने में आप लोगों ने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा, कैसे हैंडल किया इस मुश्किल वक्त को? So I'll tell you, I have covered a bit of that in the previous question, but since you have asked in detail, I would like to take you through the most difficult scenario during the COVID times which we have faced was getting in the customer from their house to the mall and making them feel safe. जी जी बिल्कुल. और इंडस्ट्री को किस तरह का चैलेंज उस समय था? So there was a lot of issues in terms of related to logistics. There was a lot of issues in terms of customer. They want to shop. They are not able to shop because the malls were being shut for COVID scenario. The food delivery was not happening. So we had initiated, as I mentioned you in past, that we had initiated on several technology aspects to be implemented in all our malls, which has helped us leverage that opportunity. And one important thing which has happened with the COVID times is that we have been able to cater to the individual needs through online setups, which we had created both for mall as well as the customers. We have recently both for mall as well as for the retailers, that is our internal customers. And we have also introduced a new technology called Enhance. Enhance is not only a loyalty program which we have involved, which we have introduced recently in all our malls. It is a composite of the customer needs to be provided while shopping in the mall. So we have catered to the needs of the customers. For example, if a person does not want to carry his baggage, he has shopped and he wants it to be sent off to a place. So through the Enhance app, he'll be able to contact one of our Enhance assistant, and he will take that material and place it in their car as per the position which is being decided. The curbside pickup, customer has placed the order online to us and through one of the retailer. The retailer comes to the mall. There is a curbside place which is being planned. The customer comes with a car out there right in front of the curbside, and the stock gets delivered there then and there in fraction of minutes. Apart from that, we have also leveraged on the opportunities
in terms of providing customer the safety and security feeling by installing different elements in the mall itself. For example, ultraviolet ray sanitization. So your shopping bag is being uh, once you are getting inside, you are sanitizing your bag. Once you are going out of the mall, you can sanitize your bag because a lot of touch points has happened. You can sanitize your bag and take it back safely to your place. There are hundreds of automatic dispensers being placed in the mall wherein people at any given point of time just access to that sanitizers and can sanitize their hands. There has been a formulation of different teams in the mall, those who are taking, they are working as a COVID warriors and they are taking care of the safety protocols being set by the mall industry as जी. well as by the government. So हम्म. any given point of time, there is any of, default happening in terms of the uh, code of conduct being not followed. हम्म. The warriors used to take care of it. We had invested a lot of money in that. We have not compromised in terms of the standards. We have also provided the customer through Enhance app, a customer uh, fix a parking slot, fix a booking table, all these things they can do through Enhance app. जी. So that's हम्म. how we are leveraging on the technology and providing best and best of kind of services जी. so that we fight with the current scenario. जी, आप आपने बताया बहुत अच्छी तरह से, बहुत विस्तार में कि क्या क्या ध्यान रखा गया है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो सुरक्षित महसूस करें और उनका पूरा जो तजुर्बा है मॉल आने का वो अच्छा रहे। और तो ये तो उनके उनके ध्यान रखने की बात हुई कि उनका ध्यान कैसे रख रहे हैं। संजीव जी, ये भी बताइएगा कि एक बहुत ही मुश्किल दौर गुजरा है इंडस्ट्री के लिए। अब ये पूरी महामारी जहाँ पे मॉल बंद हैं, जो दुकानें थी उनमें चीजें पड़ी हैं और कितने कितने दिन तक बिल्कुल बंद रही सब चीजें, तो ये एक ऐसा चुनौती भरा समय रहा है। अब आप आगे के 3-4 साल को अगर हम देखें तो उसकी क्या दिशा आपको नजर आ रही है इस इंडस्ट्री के लिए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स हमने रिटेलर्स को भी हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग देयर स्ट्रेटजीज and supporting from our side in terms of investment. We have also helped them in terms of catering to the different needs of a different retailer in terms of subsidies to be given so that they can perform better at the time scenario when it is required. So there were a lot of small retailers, those who were dying out of this particular scenario. We have supported them in terms of the waivers also. जी. So keeping all that in mind, and now when the scenario is has become better, there is the current scenario says is that all my malls in the north has come to a level of 100% recovery basis 2019, which shows that things are moving back to its place, considering that the things have economic, this e-sector has taken a lot of contribution in the market share. I agree to that. But considering the Indian culture, there is a very, very, very famous phenomena that touch and feel aspect of the Indian culture will always prevail in the industry. And the retail industry is going to bounce back the way it should be in the near times. And with the help of the omni-channel technology which we have implemented, we are further going to capitalize this opportunity and things will shape up better. जी, आपको ये उम्मीद है। मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि एक लीडिंग सीएक्सओ के तौर पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? You know, you are an inspiration for the youth and for everyone who's coming into the field, looking at your own success story. So what would you like to tell the youth? क्या संदेश होगा आपका? So in terms of passing on the message to the youth of today's, we all know that the generations have been changing and the generation gaps are bound to happen. But again, I would like to divide it into two parts. One is that learning is a never ending process. People should be very, very focused towards learning, and the environment always helps us in learning. So wherever the opportunity comes for learning, the learning should be taken as in a with a positive note, and as well as the person should be agile in terms of following the learning which he has inculcated during these times. That is one aspect.
Another is my success mantra of my life is that there are no shortcuts in life. So the sincerity, hard work, and perseverance is something which cannot be replaced by anything. So apart from getting the learning, if you are not following all these three important aspects in your life, you will never be able to succeed in the real sense. बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, हमसे ये साझा करने के लिए कि किस तरह से जो युवा हैं उनके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, जो यहाँ इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में आ रहे हैं उनको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जिंदगी में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे दोहराने के लिए बहुत धन्यवाद। और हमने ये भी जाना कि किस तरह कोविड के पहले और कोविड के बाद क्या बदलाव आया है इस क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, मॉल्स में कैसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है आप कस्टमर्स का और सुरक्षित बनाई जा रही है इस जगह को, और जो पूरा एक्सपीरियंस है मॉल्स का वो अब कितना बदला है और वहां पर कस्टमर का ध्यान रखा जा रहा है किस किस तरह से, ये हमारे साथ संजीव जी ने साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान वार्ता CXO सीरीज में। मैं हूं नगमा और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हर्षित सिंह। हर्षित बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और हर्षित जो हैं वो लखनऊ पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं। ये लखनऊ पब्लिक स्कूल और कॉलेज जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूरे उत्तर भारत की। अगर हम बात करें तो जो शैक्षिक संस्थान हैं उनमें से सबसे अच्छा, सबसे शानदार जो संस्थान जो हैं उनमें से एक है लखनऊ पब्लिक स्कूल और कॉलेज, और यहाँ के जो नतीजे हैं वो बेहद शानदार रहे हैं। इट हैज बीन प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन इंडिया। और ये भी आपको बता दें कि हर्षित जी के जो पिताजी रहे वो भी एजुकेशनिस्ट रहे, डॉक्टर SP सिंह, और वो उनके पिता का जो सपना रहा उसे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और उसको उन्होंने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जिस तरह से ग्लोबल एजुकेशन की जरूरतें रही हैं उस पर बहुत ही खरा उतरा है इनका जो इनके शैक्षिक संस्थान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षित जी इस वार्ता में। मैं आपसे इस बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूँ। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही चुनौती भरा दौर रहा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि महामारी के दौरान बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन रही, ऑनलाइन ऑफलाइन अब दोनों मोड से पढ़ाई हो रही है, एक हाइब्रिड तरीके से पढ़ाई हो रही है। ये बताइए कि जो लखनऊ पब्लिक स्कूल्स हैं वो उन्होंने जिस ऊंचाई पे वो आज हैं वो आपने किस तरह से हासिल किया है, आपका जो सफर रहा यहाँ तक पहुंचने का उसमें किस तरह की आपकी चुनौतियां रही और इस मुकाम तक पहुंचने की जो जर्नी रही होगी उसमें बहुत ऊंच नीच जैसे रास्ते में होती है वो रहा होगा, तो वो आप हमारे साथ साझा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी नगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेस्ड लखनऊ में है और लखनऊ के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई में। अब एक हमारी ब्रांच न्यू दिल्ली में भी है। जैसे कि आपका सवाल था कि इस पूरी जर्नी में जो कि मेरे फादर का एक विजन रहा है डॉक्टर SP सिंह जी का, वो एक इमेजिनेशन ही रहा है। जो उन्होंने इमेजिन किया उन्होंने इसको मैनिफेस्ट किया पूरी तरह से। मैं इसको इस तरह से ही देखता हूँ। आज भी अगर मैं पहले देखूं तो मैं डॉक्टर SP सिंह जी की बात करना चाहूंगा पहले। तो वो हर वो चीज को पहले तो सोच लेते हैं, वो सोचते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, एंड अगर वो खाली भी बैठे हैं तो हर वक्त उनके मन में कुछ ना कुछ चलता है क्रिएटिव। जिस चीज के बारे में हम आज की तारीख में देखते हैं कि क्रिएटिव लोग कैसे होते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से सीखता हूँ कि क्रिएटिविटी क्या चीज है। आई थिंक ये चीज अंडरस्टैंड कर पाना कि सबसे पहली चीज आपके मन में आपके थॉट पे शुरू हो रही है, उसके बाद ही जब आप उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे तभी वो मैनिफेस्ट करेगी। तो सिंह साहब ने जब LPS के बारे में सोचा, ये पहली ब्रांच जब बनी हमारी, उसके बारे में जब उन्होंने सोचा होगा, जब उन्होंने टीम जुटाई, तो जब आज मैं उनकी आंखों से देखने की कोशिश करता हूँ आज की ग्रोथ, या फिर आज मैं कोई भी छोटा स्टेप लेता हूँ एक भी टीम के साथ, और मुझे कितने स्ट्रगल से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि उस समय जब
रिसोर्सेस कम थे 1983 के दौरान, और उस समय सिंह साहब को क्या चैलेंजेस आए होंगे इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ फंड्स, बट स्टिल थिंग्स हैपन. सो ही वाज सो एडमेंट एंड ही वाज सो मच confident on his imagination that if you just believe and be happy and just totally believe in your thought and start acting on it, वो हो सकता है. So LPS एक ऐसा ग्रुप बना आज की तारीख में जहाँ पे तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 2,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उन सब के अंदर वही विचारधारा है जो डॉक्टर एसपी सिंह जी की है. सो आई थिंक सबसे पहले अगर विचारधारा पास ऑन होती है, उसी के बाद कोई चीज आगे बढ़ पाती है. तो एलपीएस पहले तो ऐसे ही बना. So I think this would form a good base to talk on this. And absolutely. Yeah. Sure. Yeah, that's really interesting. पर आपने जो विचारधारा की बात की है कि जो उनकी विचारधारा डॉक्टर सिंह की वो पास ऑन होती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं, उनकी विचारधारा है क्या, किस तरह से वो बहुत, अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, शैक्षिक संस्थान बहुत सारे हैं, तो क्या चीजें हैं जो लखनऊ पब्लिक स्कूल और कॉलेज को अलग करती हैं इन बाकी संस्थाओं से? तो इसमें दो लाइनें हैं. एक जो कि हमारी एलपीएस की टैगलाइंस भी हैं, और वो जो डिफाइन करती हैं कि जो हमारी विचारधारा या फिर हमारी वैल्यूज हैं क्या. सो इट्स लाइक द फर्स्ट थिंग इज इन इंग्लिश लाइक एक्सीलेंस फॉर ऑल, एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कोई भी चीज तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब हम नए आइडियाज या फिर हर सेगमेंट के लोगों को अपने साथ लाएं, उनको समझें, उनके आइडियाज क्या हैं ग्रोथ ओरिएंटेशन को लेके. Since this is an educational institution, so it has to be, we have to understand education just does not mean it's about academics. It is also about bringing in people and educating at all levels and educating yourself too. So excellence for all, excellence from all. So you have to extract that level of things and those levels of excellence, those ideas, those values, that knowledge to remove ignorance. Absolutely. So first value is that, and the second, the tagline is what our logo signifies is Gyanat Labte Sarvam, and which says that कि ज्ञान ऐसी चीज है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है. तो अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है या फिर कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको उसके बारे में सिर्फ ज्ञान नहीं. आप ज्ञान ले लें, आपके पास वो चीज होगा. सिंपल सी चीज है, अगर आपको कॉफी बनानी नहीं आती तो मतलब सिर्फ ये कि आपने अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, या फिर पता नहीं कैसे बनता है. पता कर लेंगे तो आ जाएगा. सो ऐसे ही कोई भी बड़ी चीज है, यू वांट टू अचीव, यू वांट टू मेक अ मेगा कंपनी, यू वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू वांट टू बिकम एनी पर्सन हु यू वांट टू बी, यू जस्ट हैव टू गेन नॉलेज ऑन दैट. सो द वैल्यूज, द विचारधारा, दैट इज इट. Absolutely, very well said. You know, I also want to understand you. You know, you're very young and you got into this field, and it was your father's dream, and that you're taking it forward and making it bigger. Actually, you know, his dream has grown bigger and has become a reality. तो जब आप पहले स्कूल की शुरुआत हुई उतने साल पहले, तब से अब तक का जो ये सफर है, when you look back, how do you look at that? Where have you reached up from where you started, and how did you get into this? आपने कैसे तय किया कि आप उसी लाइन में आएंगे, इस शिक्षा के लाइन में आएंगे? आप कहीं भी कहीं से भी आप पढ़ के आए या फिर आप कैसे भी सराउंडिंग्स में रहें, आपको हर समय कुछ ना कुछ लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं. अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ को लेके आई फेल्ट कुछ चीजें मिसिंग हैं शायद, तो उसके लिए मुझे अपने आप को एजुकेट या फिर और ग्रो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट लिटरली डिपेंड ऑन अदर्स टू ग्रो यू एंड पुश योरसेल्फ टू बी वेयर यू वांट टू बी. I had challenges in many areas in terms of like small things, even in terms of communication itself. कभी-कभी मुझे लगता था कि शायद मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. तो this was one part which I felt कि I might be missing on. So the only area which I understood कि जो कुछ दरवाजे थे कि इतनी ही बाउंड्री के अंदर सोचना है, I broke all those shackles of myself. कि I can just act on these areas, act in those areas, but like I mentioned earlier, कि आप प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो और लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं गया. आप सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करिए एंड स्टार्ट एट योर ओन इंडिविजुअल लेवल. चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, उसमें कोई नहीं आएगा उसमें. यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, बिलीव इन दैट. कुछ चीजें ऐसी ही थी
इन टर्म्स ऑफ पैंडेमिक, इन टर्म्स ऑफ मेनी एरियाज, जब सब लोग कंफ्यूज थे क्या करना है. सो it was me and the entire team. I just thought, I spoke to Dr. Singh, and I asked him, can we do it? Let's just start with these classes. Let me do it. And even my elder sister, she's also a director, Neha Singh ji. So she believed in me and gave me the lead in that, and that started happening. मुझे ये realization तब हुआ कि challenges कैसे भी हों, आप स्टेप ले लो, खड़े हो जाओ, अकेले ही क्यों ना हो, और उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हो. इवेंचुअली जब आपके स्टेप से आपकी स्ट्रेंथ आपके लोग देखेंगे, वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे जी, और आपके साथ खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दे बिलीव इन यू, दे बिलीव इन योर स्ट्रेंथ. दैट्स व्हाई दे स्टैंड विद यू, एंड यू हैव टू डेफिनेटली लिफ्ट देम अप टू. आपको उनका साथ देना है. सो चैलेंजेस, मुझे ये समझ में आया इस फिलॉसफी से कि सिंह साहब ने अपने साथ टीम्स कैसे बनाई होंगी. उन्होंने एक चीज सोची, उसके चैलेंजेस पे वो डटे रहे, अकेले काम किया पहले, और जब लोगों को भरोसा हुआ वो अपने आप जुड़े उनके साथ, और आज की तारीख में एलपीएस है. जी जी. तो एलपीएस बना, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से ये बताया. आपने चुनौतियों की, चैलेंजेस की बात की, जहाँ पे समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशन की सोचिए और एक एक कदम करके आगे बढ़िए. लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे. अब ये जो महामारी थी वो बहुत एक ऐसी चुनौती लेके आई जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी, और धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हुआ. स्कूल्स, क्लासेस, फिर ऑफलाइन भी होने लगा. तो एक बड़े शैक्षिक संस्थान के साथ जुड़े होने और उसको लीड करने के नाते पे आप हमें बताइएगा कि अभी क्या है ये जो मोड है पढ़ाई का आपके कैंपसेस में, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या आप हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं, किस तरह की इसमें चुनौतियां हैं, तो अभी किस तरह से चल रही है शिक्षा? बिल्कुल अंगमा जी, ये एक काफी मेजर रेवोल्यूशन रहा असल में. मैं इसको इस तरह से ही देखता हूँ कि इस पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से पढ़ाई चली, इस रेवोल्यूशन के दौरान हम लोगों ने देखा कि टीचर्स से लेके गार्जियंस, इवन स्टूडेंट्स, या जिन लोगों ने भी ऑनलाइन मोड को अभी तक पूरी तरह से अपनाया नहीं था, उन्होंने इसको पूरी तरह से अपना लिया. एंड दैट बिकेम अ पार्ट, बिकॉज दैट वाज ओनली सोर्स. तो देयर वाज नो वन वाज लेफ्ट विद एनी चॉइस. सो ऑफ कोर्स इस चीज को बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट किया सबने. इसका इम्पैक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से सबसे अच्छा ही रहा, बट यस, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस इम्पैक्ट ने और एजुकेट किया सबको. I believe that online modes now have to become an integral part always, because this way at least the education can always continue. And the best part, with the development in the technology, इस चीज को हम और easily accessible बना सकते हैं, और बनाया जा रहा है, because that's what we did. हमने अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए. We developed our own softwares, जो कि which gave them an overall experience of a classroom, चाहे वो attendance के पार्ट पे हो, चाहे वो availability के पार्ट पे हो. Even we had these features in our software कि अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए भी कैमरे के बाहर है, so teachers would get notified for it. So these are small steps that कि वो घर पे भी classroom का experience कैसे दिया जाए, and how can we actually judge the value कि उस ऑनलाइन क्लास की बच्चे को मिल रही है कि नहीं. सो आई थिंक इस ऑनलाइन मोड को और ज्यादा डेवलप करने के पार्ट पे जितना काम हो सकता है वो वही किया जाए, और वही किया जा रहा है. दैट्स व्हाट LPS इज डूइंग कंप्लीटली. Talking about the offline setting, because now we are really grateful that things have started normalizing a little again. So बच्चे schools आ रहे हैं. So we totally understand कि पूरी तरह से ऑफलाइन पढ़ाई को रिप्लेस नहीं कर सकते, because the real time connection, the real time interaction in the classroom, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ हो बच्चों का, या फिर टीचर्स का पढ़ाने को लेके, the real time impact in the classroom will give the real value. So just talking to a screen or teaching over a screen, ये पूरा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, बिकॉज जाहिर सी बात है उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं. एंड वी एज ह्यूमंस वी नीड दैट कनेक्शन, दैट अपीयरेंस फिजिकली. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि हम सिर्फ एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ऑनलाइन के थ्रू.
but real environment is of the school, the vibration, the entire environment जो वहाँ का होता है स्कूल का, that helps you focus and get the real value and understanding of whatever you are being taught. So I think we have to merge the academic curriculum and the entire school curriculums with the online and the offline setting always. There have to be certain portions in an online setting and certain portion in an offline settings. The ratio could be a little less for the online, but yes, we have to continue with that. So this is what I think the challenges have been there, but yes, we can totally merge things together. Yeah. So Harshit, I would like to ask you, it was a very difficult time emotionally for a lot of people, very challenging time. When you talk about the changes that you incorporated online and offline, तो skills के sense में या कुछ curriculum में add करने के लिए क्या ऐसी चीजें आप लोगों ने क्यों, क्योंकि बच्चे भी अपने ऐसे परिवारों से आ रहे हैं जहाँ पर बहुत तरह की परेशानी भी रही हो, तो कुछ और स्किल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उनको पढ़ाई के साथ साथ या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस ऐसी रही हो जो उनको इससे उबरने में बेहतर उन्हें तैयार करती हैं and helps them tide through this time. Would you like to talk about that? Oh, absolutely. And in fact, that's the real domain which I really love to work upon, because you see, education, the word education. So for me, I see it that education is meant to give you freedom. That's what education is. It is not there to restrict you with anything. These are the lines. And on this, now you are educated, you have did a certain degree or a part, now you can move on this. Now you move on this. So I don't believe in that. Education has to be a multi-dimensional approach. And that includes not just from the outside, but from the inside as well. I have worked a lot on myself from the inside, understanding what's going inside me. So like it is said, if you know yourself, you can definitely achieve whatever you want outside. So for that, I personally have participated with students. I have participated with them in just giving them small practices that they should be doing, because we need to realize that human beings are emotional beings. Like anyone, so चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, सबके अपने emotions हैं और उसकी intelligence है, and there are so many intelligences in us that we usually do not talk about. So I think अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस के हम क्वेश्चन को हम पकड़ें और उस पर ही अगर हम काम कर लें, तो आप हर सेक्टर में जैसा चाहो वैसा आप रिजल्ट्स ला सकते हो. It's just how you feel inside is what you'll manifest outside. So I think a very important thing is that कि अगर जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर उसकी बात करते हैं, तो हैप्पीनेस आए कैसे? So हैप्पीनेस कैसे है कि जब आप वो करोगे जो आप चाह रहे हो. तो अगर this is that simple. अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं. Behral, but we'll just stick to the education part. So giving students certain practices of, even if they're talking and even whatever they are listening, can they listen to something good? Because the world is largely negative. I mean, अगर आप कहीं से भी कुछ भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर यूजुअल बातों में कई बार ऐसा समझ में आता है कि अच्छी बातें नहीं हो रही होती, तो जो आपके मन में जाएगा तो आप जाहिर सी बात है उसी के हिसाब से आप रिएक्ट के बिहेव करोगे. So the more the student is, I would use the word bombarded with the good information. I would use the word again, bombarded with the good information. That will definitely help him grow. And the repetition of that information. I mean, like it is said, if you even tell a person a lie, but a repeated number of times, he will end up believing it. So you can tell a student that you are this thing, you are that thing, you can do this, you are doing it. And don't tell that you can do it. Just tell them you are already that person. And you will ultimately start imagining the same thing. Like I definitely relate this thing with my father. He just imagines and he manifests. So बाहर का influence आप कितना होने दोगे बच्चे के ऊपर, वही results में दिखेगा. So that's what schools are doing. That's what LPS is doing. I am doing. And I think that is a practice that I'm adopting. Let students imagine, think whatever they want to and whatever they want to become. We just give them a source. This is what you can do. This is what you are. Think about it and grow. So I think ये काफी massive impact डालता है, and this has made an impact. I'm in touch with few students which I am, you can say, mentoring,
and they have made a massive difference in their lives. So yes, that's what that's very, very encouraging. If you, as the leader here, are so involved with the students, and if you're mentoring some of the students, that's absolutely very encouraging for them. हर्षित जी, ये भी बताएं, you're a young leader, और एक लीडर होने के तौर पे, एक युवा लीडर होने के तौर पे, किस तरह की मुश्किलें आई आपको, जिसे पार पाया, एंड आगे अगर आप देखें तो आने वाले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, कहाँ देखते हैं आप खुद को, अपने शिक्षा संस्थानों को कहाँ आगे ले जाना चाहते हैं? So on this I would like to add this thing, that I'm really grateful that I am blessed with a legacy that Dr. SP Singh created. You see, Lucknow Public Schools and Colleges is now an organization which has created numerous bureaucrats, like you talk about IAS, IRS, and students, professors present in universities all across India and abroad. And then we have created scientists who are everywhere. I mean, right now, so I'll just add, for even chief guests in our functions, we are hosting our own alumni as chief guests, because they are at such a position. So this is like, I'm coming to the point where how I see myself in 5 years. But this is a part, because I have to realize that what does this information gives me. So my identity is this institution. Like each year, we have students getting selected all across, like in the biggest of the biggest competitions. You talk JEE, NEET, or the SSBs, the NDAs. And it's so common that even if my father is traveling, we happen to come across and meet our own alumni at the airport or at the railway station. Sir, I'm positioned here all because of you. And they come and touch his feet. So you understand, this is the image that I have in front of me. So I think I would really want to be someone like Dr. SP Singh, who is even, if he's in Japan, an alumni of LPS comes here, sir, in Japan, he should be saying, sir, I am going to send my kid to LPS again. And he should be, someone, a product of LPS. So I think that achievement and that level of understanding and that level of value that I will get, and if that's the respect I'll get, that's the biggest thing that I can get, that my father is getting. And that legacy should keep on prolonging. And LPS would keep on expanding all across the globe, I would say. And that's how I see myself. I mean, instead of targeting on a position or anything, I would see myself as a person, as a leader, who can really make a difference in people's lives. And I have started doing that. So that's how I see it. Absolutely. That's brilliant, brilliantly put. What better can you aspire for, than to produce a new generation who looks up to you, and you have a role model in front of you. आपके पिताजी की आपकी मिसाल आपके सामने है, और अभी भी लोग आ रहे हैं उन्हें, और हर जगह लोग मिल रहे हैं। और जब कोई एक पीढ़ी आके कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजना चाहती हूँ, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा रिवॉर्ड है शायद, कि कितनी अच्छी यादें हैं उनकी जुड़ी हुई इस शिक्षा संस्थान के साथ। और आप आने वाले दिनों में खुद को उसी जगह पे देखना चाहते हैं, जो आपके पिता ने जिस विरासत को खड़ा किया है, वहां उसको आप बनाए रखना चाहते हैं। तो हमने ये जाना आपसे कि किस तरह स्कूल जो है इस मुश्किल दौर में इन चुनौतियों से उभरा, क्या बदलाव किए, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए किस तरह के बदलाव किए, और कैसे टीचर्स को भी बदलना पड़ा और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा है बच्चों के साथ। हर्षित जी, आपको शुभकामनाएं आगे और तरक्की के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो शुक्रिया इस वार्ता में शामिल होने को। थैंक यू सो मच।